So we were studying chapter number second, capital structure theories. So in that we are going to study the six theories. First is we already studied the first two theories, that is net income approach and net operating income approach. So both the theories is already given by the same author, Duran Revin. So on the basis of his assumptions and theory, we have solved the each is numerical related to the theory. And in the last lecture itself, we have started the next theory, that is Modigliani and Miller theory. So this is the third theory which is help the company to form their capital structure. So according to this theory, so company's capital structure is not a factor in its value. So we are studying ki there is any relationship between capital structure decision and the valuation of the firm. All the theories is based on this statement. All the theories means the net income approach, net operating income approach, and this theories is also based on the one line that uh, there is any relationship between capital structure decision and the valuation of the firm. Okay, valuation of the firm means what कि total capital company has raised. ठीक है, capital raise करने की there are two ways. Company can raise the capital through own capital and through borrowed capital. So that is related to your capital structure decision. So technically there is a difference, there is a relationship between if we change anything in capital structure decision, ultimately it will affect our value of the firm. Okay, so this is the baseline. On that every theories has their other views. Okay, so approach, this is a third theory we are studying which is related to your capital structure theory. So theorem state that company's capital structure is not a factor in its value. So he said that there is no any relationship between capital structure decision and the company's valuation or company value. So market value is determined by the present value of future earnings. Okay? So he said that the market value is determined by the present value of future earning. So what is our present value of future earning? So which type of technique we are using, student? In earlier few lectures we have studied the time value of money. In that discounting and compounding technique we have studied. So which technique it is applicable here? So as per this two author, so they said the market value is determined by the present value of future earnings. कोणती टेक्निक अप्लाय होते स्टुडंट याच्यात? आपण टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनीचे खूप सारे लेक्चर्स त्याच्यावर डिवोट केले आणि त्याच्यावर बरेचसे न्यूमरिकल्स पण आपण सॉल्व्ह केले. द प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ फ्युचर अर्निंग इज अ डिस्काउंटिंग टेक्निक. ठीक है, कंपाउंडिंग टेक्निक मीन्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी, present value of future earnings or future money, that is the discounting technique. So this theory is based on the discounting technique. The theorem has been highly influential since it was introduced in 1950s. The theorem states that market value of the company is directly calculated as a present value of future earnings and it is underlying assets. So independent of its capital structure. So he said that his theory is based on this statement. That statement is called as a, he said that the market value of the firm, it is correlated or directly calculated as a present value of its future earning and its underlying assets. Or capital structure decision is independent, means it is not related to the valuation of the firm.
The main idea of this theory is that capital structure of the company does not affect its overall value. ठीक है, so इनके हिसाब से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं कर रहा है वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then next, this is an capital structure theory named after Franco Modigliani and Martin Miller, that is called as a theory, proposed two propositions. Okay? So they have introduced, there are two authors, that Franco Modigliani and Martin Miller. So they have developed this theory, and they also developed the two propositions. Okay? So first proposition says that capital structure is irrelevant to the value of the firm. The value of two identical firms would remain the same. The value would not affect by choice of finance adopted to the finance the asset. The value of the firm is dependent on the expected future earning. It is when there is no tax. Okay? So first proposition he has, this both the author has made, that there is no any correlation between capital structure and the value of the firm. Whatever the sources of finance company has adopted, that will not affect the value of the firm. The value of the firm is depend on the earnings, future earning, expected future earnings of that particular company. It will affect the valuation of the firm. And in proposition first, there is no any taxes. Okay? The second proposition he said, it says that financial leverage boosts the value of the firm, reduce the WACC, means weighted average cost of capital. It is when tax information is available. The other preposition is based on, again I have study, means आपको एक मैंने एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लीवरेज रिलेटेड एक एग्जांपल लिया था स्टूडेंट. कितने बच्चे थे उस क्लास में? मैंने फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक एग्जांपल लिया था कि if company has increased the debt capital in its capital structure, the earnings available for equity shareholder will increase. That is called as a financial leverage, और इसको ही trading on equity बोलते हैं. ठीक है? So the preposition second is based on that कि financial leverage boosts the value of the firm and reduce the weighted average cost of capital. ठीक है? When the tax information is available. Okay? So preposition first, there is no tax is available, means tax information is not available, tax is not applicable for the company. Second proposition is based on the, there is a tax information, tax is available for that. Okay? So financial leverage boosts the value of the firm and reduce the weighted average cost of capital. So this is the second proposition. There are some assumptions. Okay? So there are some assumptions these two author has framed. There is no tax. Okay? But actual scenario, this theory will not applicable. The company has to pay the taxes. The government has implies the taxes on every company. They has to pay the taxes. Okay? So this is the assumption, one of the assumptions which is not applicable for the real life situation or reality, but they have the assumptions. So there is no taxes. Transaction cost for buying and selling security as well as bankruptcy cost is nil. Okay? So they said that there is no any transaction cost, but in reality we have to pay some transaction cost by selling and by buying and selling the security, as well as there is no bankruptcy cost also. There is a cost. There is a symmetry of information
This means that investor will have the access the same information that corporate would. Investor will thus behave rationally. So they said that he corporate is also corporate and the investors they are having the same kind of information. Okay, so there is a asymmetric information means both the having the same information when they are taking the decision of buying and selling the security. The cost of borrowing is the same for the investors and company. So cost of borrowing means rate of interest. If I want to take a loan, we need to pay the same rate of interest for the investors also and for the company also. There is no any flotation cost such as underwriting commission, payment to the merchant banker, investment, advertisement expenses. Okay? Flotation cost is means what? If there is a company he want to raise public issue or he want to raise the first time shares to the for the investor to the market, the primary market, the IPOs. If the company introduce the first time IPO, first time share to the market or issue the new share to the market, that is called as a primary market. So company जब issue करती है share, there are some expenses company has to incur. Those expenses is called as a flotation cost. ठीक है, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर सेल नहीं कर सकती. He has to appoint merchant banker, he has to appoint the underwriter, he has to appoint the some agents, ठीक है, to sell their share to the investors. ठीक है, सो इन लोगों को हायर करने के लिए कंपनी हैज टू पे द अंडरराइटर कमीशन, पेमेंट टू द मर्चेंट बैंकर. देर आर सम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर आल्सो देयर. ठीक है, so as per this theory they said that there is no any flotation cost, but actually we have company has to incur this flotation cost if company want to issue their share first time in the market. There is no corporate dividend tax. Again there is no any corporate dividend tax. Okay, so these are the assumptions, but in reality these assumptions will not work out. But at the time of theory has developed, they have made these assumptions. Okay, so there are 6 assumptions, student. There is no any taxes, transaction cost for buying and selling security as well as bankruptcy cost is nil. There is a symmetric information, means information for the investor and for the company they are the same type of knowledge or information is having for the investor also, for the corporate also. There is the cost of borrowing is same for the investors and the companies. There is no any flotation cost such as underwriting commission, payment to the merchant banker, advertisement expenses. These are the cost is not there, and there is no any corporate dividend taxes. Okay? Now, so there are two propositions. Okay? So first proposition is that ki there is no any correlation between capital structure decision and the valuation of the firm. The market value of the firm is based on the future earnings of that particular company. Okay? The second assumption is there ki no cap financial leverage is there. If we change in capital structure will affect the value of the firm is also, and it will reduce the weighted average cost of capital, and there is a tax information is there. Okay, so these are the two proposition. Again there is a two version. Okay, these are the two proposition which is applicable in perfectly efficient market. जो अभी जो एमएम थ्योरी में जितने assumptions है, that is called as those assumptions is work in that particular market. That market is called as a perfectly efficient market. And second is real world. The real world means real market, means those assumptions is not work here. That is called as a real world. Okay, so these two proposition again classify into these two markets. Okay,
So again there is a two version of this MM theorem. MM theorem in a perfectly efficient markets, MM theorem in real world. ठीक है. So MM theorem in first version, that version is called as a first version of MM theorem, was full of limitation, and it was developed under the assumption of perfectly efficient market in which company do not pay taxes, there is no any bankruptcy cost, asymmetric information. फॉर रियल वर्ल्ड मीन्स मैंने अभी जो बोला कि ये सारे अजम्पशंस रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि देयर इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट, देयर इज अ बैंक्रप्सी कॉस्ट, देयर इज अ असिमेट्रिक information for the investor and information for the company, they are the different. There is a flotation cost, there is the company has to pay the taxes, so these assumptions is not applicable for the real world. So second version of this MM theorem developed, the second version of theory is including taxes, bankruptcy cost, asymmetric information is there, asymmetric information is there, other things. Okay, so again two proposition, two version. Okay, first version is assumption, all assumptions is applicable in first version, and in second version assumptions applicable, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड है, वहाँ ये सारे assumptions वर्कआउट नहीं हो रहे. ठीक है. देन MM थ्योरम इज परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट. ठीक है. अभी समझ लो कि एफिशिएंट परफेक्ट मार्केट मीन्स वो 6 assumptions applicable है. ठीक है. So this is the first version of MM theorem with assumptions of perfectly efficient market. Assumption implies that company operating in the world of perfectly efficient market do not have to pay any taxes. Trading on securities executed without any transaction cost. Bankruptcy is possible, but there is no any bankruptcy cost. Information is perfectly asymmetrical. Okay, so this is the proposition 1. So in that, your value of underlying firm means unleveraged firm, leveraged firm. Unleveraged firm means leverage. Leverage means what? Ki company has to pay the interest on borrowed capital. ठीक है. मतलब इन अनलिवरेज फर्म मीन्स कंपनी ने के पूरा कैपिटल सिर्फ इक्विटी से रेज किया है. उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड कैपिटल नहीं है कि जिसमें कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज अनलीवर्ड फर्म. ठीक है. लीवर्ड फर्म मीन्स व्हाट? कि फाइनेंसिंग थ्रू द मिक्स ऑफ डेप्ट and equity capital. The company has a combination of borrowed capital also and and own capital also. Company has to pay the interest on borrowed capital. If company earns the profit or not, but company has to pay the interest on borrowed capital. That firm is called as a levered firm या leverage firm. ठीक है. Understood student? समजते स्टुडंट. थोडं ही थेरी अवघड आहे अंडरस्टँड करायला. कळतंय स्टुडंट मी काय म्हणते ते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. सो टिल नाउ what we have understood in MM theorem, there are two proposition and two versions. ठीक है. So first version is what? कि जितने भी assumption ये MM थ्योरी में किए वो पूरे के पूरे एप्लीकेबल हो रहे फर्स्ट वर्जन में. ठीक है. सेकेंड वर्जन क्या कि जो assumptions है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे. ठीक है. So these are the two versions. So first version is perfectly efficient market कि जहाँ सारे assumptions applicable हो रहे. ठीक है. So in that कि value of unleveraged firm is equal to value of leveraged firm. ठीक है. मतलब आप लोग कैपिटल रेज करो, एक तो पूरे के पूरे ओन कैपिटल से, कंपनी कुछ रेज करो बोरोड कैपिटल से और ओन कैपिटल के कॉम्बिनेशन से. सो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यूएशन ऑफ बोथ द फर्म. ठीक है. एक फर्म है कि जो पूरे की पूरा कैपिटल अपने इक्विटी से रेज कर रही है, देयर इज नो एनी फाइनेंशियल बर्डन कि
company, if a company earns the profit, there is company need not pay the interest on that borrowed capital. Okay, so वो अनलिवरेज फॉर्म कि पूरे के पूरा कैपिटल उन्होंने इक्विटी से ही रेज किया है, और लिवरेज फॉर्म मीन्स उन्होंने मिक्स किया है डेप्ट एंड इक्विटी को. ठीक है, सो दोनों की वैल्यूएशन सेम है इफ वर्जन 1 में. ठीक है, सो परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट में दोनों की वैल्यू सेम है. देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म. So value of the leverage firm and value of the unleveraged firm is the same in version 1. That is perfectly efficient market. Perfectly efficient market means सारे के सारे assumptions applicable हो रहे. ठीक है. Now the first preposition essentially claim that company's capital structure does not implies the value of the firm, since the value of the company is calculated as a present value of future cash flow. The capital structure cannot affect it. Also, it's perfectly efficient market. Company did not pay any taxes. Okay? So that's why the company with 100% leverage capital structure does not obtain any benefits from the tax deductible interest payment. Okay? So that is called as a tax deductible interest payment, means financial leverage. ठीक है, मतलब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पूरे के पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देयर इज नो एनी कंपनी डिड नॉट हैज टू पे एनी टैक्सेस. ठीक है, टैक्सेस पे नहीं करना है कंपनी को. सो कंपनी ने बोरोड कैपिटल से रेज किया, तो कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट बोरोड कैपिटल. इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस. ठीक है, तो कंपनी को इंटरेस्ट में वो टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट का बेनिफिट नहीं लेते आएगा. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नो एनी टैक्स कंपनी हैज टू पे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ लीवरेज फर्म और अनलीवरेज फर्म. Now, this is the preposition first. ठीक है, now second preposition what they say कि the company has to pay the taxes. ठीक है, कंपनी को टैक्सेस पे करने हैं, जो हमारा सेकेंड प्रपोजिशन था. सो वेयर सो MM प्रपोजिशन सेकेंड, MM theorem 1, where there is a formula they have developed. In that formula, so RE is called as a cost of levered equity. RA is called as cost of unlevered equity plus cost of debt divided by debt to equity ratio. The debt capital divided by equity capital. ठीक है, into the bracket RA again cost of unleveraged equity minus RD. RD means cost of debt. ठीक है, so we will use this formula to solve the numerical. So second proposition of MM theorem states that company's cost of equity is directly proportionate to the company's leverage level. Increase in leverage level induce the higher default probability to the company. Therefore, investors tend to demand the higher cost of equity return to be compensated for the additional risk. ठीक है, so in preposition second, the financial leverage technique or trading on equity technique is applicable. ठीक है, what we say कि if debt capital is added to the capital structure, the earnings available for equity shareholder will increase. Why the equity shareholders earnings will increase? Because borrowed capital structure में raise किया जा रहा है, so ultimately it will increase the risk of the equity shareholder. जो actual owner है उनकी risk बढ़ रही है, तो वो risk compensate करने के लिए उनकी earnings बढ़ा देती है कंपनी. ठीक है,
So that is called as a financial leverage and trading on equity. तो यही यही इसी में बोला गया है कि increase in leverage level induce the higher default probability to the company. Therefore, investors tend to demand the higher cost of equity means returns. वो डिमांड कर रहे हैं कि हाई रिटर्न्स हमें दे टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द एडिशनल रिस्क. दिस इज द proposition second कि there is a financial leverage is applicable. ठीक है, ये जो preposition second it says that financial leverage boosts the value of the firm, reduce the WACC, then when its tax information is available. ठीक है, ये preposition second की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ. ठीक है, proposition वन में आपका value of the equity, value of the levered firm and value of the unlevered firm same है. There is no any change in valuation. But in proposition second में if you increase the debt capital in capital structure, it will ultimately increase the risk to the equity shareholder. ठीक है, तो उनके कॉम्पेंसेट करने के लिए द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर विल इंक्रीज. ठीक है, सो फॉर दैट वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, द फॉर्मूला इज आर ई इज इक्वल टू आर ए प्लस डी डिवाइडेड बाय ई इंटू द ब्रैकेट आर ए माइनस आर डी. ठीक है, सबके एब्रिएशन यहाँ दिए हुए हैं. ठीक है, ओके. नाउ वर्जन सेकेंड. ठीक है, हमने परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट जहां सारे के सारे जो अजम्पशंस थे 6 अजम्पशन जो है वो एप्लीकेबल हो रहे. सो दैट इज अ वर्जन वन. नाउ वर्जन सेकेंड दैट इज रियल वर्ल्ड. There is a tax company has to pay, there is a flotation cost, there is a bankruptcy cost, there is a asymmetric information available for investors, information available for the company, that is total both are different. Okay, so this is the real world example. Again both the proportion we will applicable here. Okay, so mm theorem in real world. ठीक है, mm theorem in परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट कि जहाँ वो 6 के 6 अजम्पशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं. अभी वो 6 के 6 अजम्पशंस एप्लीकेबल यहाँ नहीं हो रहे. ठीक है, सो mm theorem in real world. Conversely, the second version of mm theorem was developed to better the suit the real world condition. ठीक है, अभी ये mm theorem का सेकेंड वर्ड जो है रियल वर्ल्ड का जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने बाद में डेवलप किया, ये इन्वेंट किया. ठीक है, so yes it will develop to better suit the real world condition. The assumptions of newer version implies that company pay taxes, there is a transaction bankruptcy agency cost is there, information is not symmetric means information available for the investor it is different to the information available for the corporate. So it is different. कंपनी के पास जो इंफॉर्मेशन है और इन्वेस्टर के पास जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन के बेस पे वो लोग डिसीजन ले रहे वो इंफॉर्मेशन अलग अलग है. इन्वेस्टर्स के पास भी अलग इंफॉर्मेशन है और कंपनी के पास भी अलग इंफॉर्मेशन है. ठीक है, सो preposition वन. So for that again they have developed one formula. So proposition mm second, that is where TC is called as a tax rate. D स्लाइड चेंज नाही होय योगेश, नाही झालंय का? कोणतं आहे आता तुमच्याकडे स्लाइड काय दिसतंय? ओके ओके, एक मिनिट मी परत शेअर करते.
आता दिसते स्लाइड नंबर 45. theorem in real world. अरे एक मिनट. अच्छा, सॉरी योगेश. ठीक आहे. आता मी अनम्यूट केलं. आता स्लाइड पण दिसते आणि माझा आवाज पण ऐकू येतोय. ओके. सो theorem in real world. ठीक आहे. So theorem, they have first introduced two proposition and two version of the market. ठीक है. First version is called as a efficient perfect market, perfectly efficient market. That is, in market, whatever the assumption is introduced by this theorem, this all assumption is applicable in perfectly efficient market. Okay. Now second is real world, means all the assumption which is introduced by this theorem, it is not applicable in real world. That is the second version. And again there are two proposition. First proposition is say कि there is no any correlation between capital structure decision and value of the firm. The market value of the firm is depend upon the future earnings. Okay. Present value of the future earning. And second proposition is said that there is an effect. Any change in capital structure will affect the value of the firm is also, and weighted average cost of capital also. Okay. So in real world, this is second version, and again we will check with proposition 1 also and proposition second also. Okay. So in real world, conversely, the second version of theorem was developed to better suit the real world condition. The assumptions of the newer version implies that company pay the taxes, there are transaction and bankruptcy and agency cost. Information is not symmetrical, means information available for the investor and information available for the companies and corporates, they are the different, क्योंकि अलग अलग इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है. ठीक है. सो इन दैट proposition 1, again in this theorem they have developed the formula. So value of leverage firm means there is a mixture of equity and debt capital, and unleveraged means only they have raised their whole capital through the equity. So VL means valuation of the leveraged firm is equal to valuation of unleveraged firm plus TC. T means tax rate multiply by debt capital. Okay. So this is the formula they have developed. So the first proposition state that
tax shield that reduce from the tax deductible interest payment makes the value of leverage company higher than the value of unleveraged capital company. ठीक है, जो टैक्स इफेक्ट हो रहा है, ठीक है. सो डिफरेंस बिटवीन लीवरेज वैल्यू एंड अनलीवरेज इज द टैक्स डिफरेंस. ठीक है, जो टैक्स का टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस पे जो टैक्स का इफेक्ट आ रहा है उतना ही उन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, सो लीवरेज फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलीवरेज फॉर्म प्लस टैक्स मल्टीप्लाई बाय डेब्ट कैपिटल और बोरोड कैपिटल. ठीक है, the main rationale behind the theorem is that tax deductible interest payment possibly affect the company's cash flow. ठीक है, जो कंपनी बोरोड कैपिटल रेज कर रही है उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है उस पे जो टैक्स का बेनिफिट कंपनी ले रही है उसमें कंपनी का कैश फ्लो पे इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, since the company's value is determined as a present value of future cash flow, the value of the leverage firm will increase. ठीक है, मतलब जो कैश फ्लो पे हम लोग जो टैक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पे हम लोग को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो हमारा कैश फ्लो वैसे भी बढ़ेगा. ठीक है, सो द फ्यूचर वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपनी मार्केट वैल्यू इज डिटरमाइन द फ्यूचर कैश फ्लो. ठीक है, हमारी फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ेगी. दैट्स वाई ये फॉर्मूला इन लोगों ने ऐसे बनाया कि अनलिवरेज फॉर्म में टैक्स जो टैक्स हम लोग एप्लीकेबल है मल्टीप्लाई बाय डेब्ट कैपिटल. ठीक है, और दैट इज द वैल्यू ऑफ द लीवरेज फॉर्म. देन दिस इज अ प्रपोजिशन फर्स्ट. The second proposition they again develop one formula for the second proposition. Now second proposition means what? In real world means वो assumptions applicable नहीं हो रहे. ठीक है, in preposition second for the real world condition state that cost of equity has a directly proportional relation with the leverage form or leverage level. ठीक है, so they said that कि preposition second is called कि there is a difference, there is a relationship between capital structure and the value of the firm. इनमें relationship है. ठीक है, उसके बेसिस की ये प्रपोजिशन सेकेंड विद रियल वर्ड. ठीक है, सो अगेन दे हैव गिवन वन फॉर्मूला दैट इज आर ई इज इक्वल टू द रेट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, इनके एब्रिएशन मैंने पहले के इसमें दिए थे. ठीक है, आर ई इज अ कॉस्ट ऑफ लीवरेज इक्विटी. सो आर ई इज कॉस्ट ऑफ लीवरेज इक्विटी इज इक्वल टू आर ए that is unleveraged equity. Cost of unleveraged equity RA is equal to D divided by E, debt capital divided by equity capital, multiply by 1 minus tax, multiply RA minus RD. RA is the cost of unleveraged capital minus RD. RD means cost of debt. RD means cost of debt. Okay, so we need to use this formula. The second proposition for the real world condition states that the cost of equity has directly proportional relation with a leverage level. Nonetheless, the presence of tax shield affect the relationship by the making the cost of equity less sensitive to the leverage level. Although the extra debt still increase the chance of companies default, or investor are less prone to the negatively reacting to the company taking additional leverage, as creates the tax shield to the boost the value. Okay, so now what we are calculating कि लीवरेज फर्म की वैल्यूएशन और अनलीवरेज फर्म की वैल्यूएशन. ठीक है, अभी रियल लाइफ वर्ल्ड में there are the taxes. ठीक है, again the tax if we introduce the any capital or shares into the market, company has to incur the flotation cost, bankruptcy cost is there. ठीक है, so there is a difference between value of the leverage firm and value of the unleveraged firm. there are the tax benefit also. तो इन लोगों ने टैक्स का भी बेनिफिट प्लस जो कॉस्ट में डिफरेंस है
कॉस्ट में फ्लोटेशन कॉस्ट या बैंकरप्सी कॉस्ट, उस कॉस्ट का भी डिफरेंस, ये सारा लेके द वैल्यू ऑफ लीवरेज फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अनलीवरेज फॉर्म, ये स्टेट किया है इसे, ठीक है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड? MM थ्योरम, Yes, ma'am. preposition 1, preposition 2, ठीक है। Again both the preposition is applicable in perfectly efficient market and real market. Perfectly efficient market means जो MM theory के जो assumptions है वो applicable हो रहे पूरे के पूरे। रियल वर्ल्ड में जो भी assumptions MM theory में दिए वो applicable नहीं हो रहे, ठीक है। They have given the formula also for to calculate the leverage value, leverage firm value and unleveraged firm value. Leverage firm value means what, कि उन्होंने borrowed capital को भी introduce किया है। borrowed capital means company has to pay the interest on borrowed capital, that is called unleveraged leverage firm, ठीक है। unleveraged firm means what, कि कंपनी ने पूरा के पूरा कैपिटल इक्विटी के थ्रू ही रेज किया, उन्होंने बोरोड कैपिटल नहीं रेज किया है, ठीक है। तो उन दोनों के वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, ये इस MM थ्योरी में अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग प्रपोजिशन में अंडरस्टैंड करने का या एक्सप्लेन करने का इन लोगों ने ट्राई किया है, ठीक है। हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपको और अच्छे से ये MM थ्योरम समझ में आएगा, ठीक है। नाउ अगेन इन्होंने और एक किया है कि अगेन इन्होंने दो वर्जन दिए हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन विथ टैक्स, प्रेपोजिशन विथ विदाउट टैक्स, ठीक है। अगेन इन्होंने आर्बिट्रेशन प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस एक और उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अभी अगेन विथ दिस टू प्रोपोजिशन विथ द टैक्स एंड विदाउट द टैक्स, ठीक है। So MM approach, proposition with taxes. MM approach assume that there is no taxes, but in real world it is a far from truth. Most companies, most countries, if not allow the tax companies, this theory recognize the tax benefit accrued by the interest payment, ठीक है। कंपनी टैक्स पे करिए और उसमें टैक्स बेनिफिट वो ले सकती है जब उनके पास इंटरेस्ट पेमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। कंपनी पहले अपने अर्निंग से इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्ट करेगी एंड जो बची हुई अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करेगी। सो वो इंटरेस्ट पहले डिडक्ट कर रहे हैं तो दैट इज मीन बाय टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो टैक्स का बेनिफिट लेती है इफ देयर इज अ इंटरेस्ट पेमेंट इन दैट कैपिटल, कंपनी के पेमेंट में इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। सो दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज दैट टैक्स बेनिफिट अक्रूड बाय द इंटरेस्ट पेमेंट, interest paid on borrowed fund, it is a tax deductible. However, same in case with the dividend payment on equity also, ठीक है। ये सेम केस जब होगी जब हमें डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं ऑन इक्विटी also. So trade-off theory advocates that company can capitalize its requirement with the debt as well as cost of distress. Cost of bankruptcy exceeds the value of the tax benefit. The increase the debt until the given threshold value will add the value to the company, ठीक है। कंपनी ने मतलब जो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है या टैक्स का बेनिफिट कंपनी कब तक लेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड, ठीक है। हाउ मच डेप्ट कैपिटल कंपनी हैज टू इंट्रोड्यूस टू गेट द टैक्स बेनिफिट, वो थ्रेशोल्ड कंपनी को पता होना चाहिए। उसके बियॉन्ड कंपनी ने डेप्ट कैपिटल ज्यादा रेज कर दिया, देन कंपनी नॉट एबल टू टेक द टैक्स बेनिफिट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ लीवरेज, ठीक है। ये ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ लीवरेज, जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसकी ट्रेड ऑफ थ्योरी कंपनी को पता होनी चाहिए कि टिल व्हाट
threshold company has to raise the borrowed capital into the capital structure to take the benefit of tax benefit. So this is the one thing company has to remember when proposition with the taxes. Another is approach in a arbitrage mechanism. ठीक है, सबसे पहले arbitrage mechanism क्या है? Arbitrage mechanism means what? कि there are so many stock exchange. ठीक है, Bombay Stock Exchange, London Stock Exchange या other stocks exchange. ठीक है, so what the investors do, buy from one market and sell to the another market. ठीक है, तो वो कंपनी क्या वो इन्वेस्टर्स बेनिफिट होते हैं. ठीक है, ये समझ लो ये सेम स्टॉक इस मार्केट में कम प्राइस में अवेलेबल है और सेम स्टॉक इन अदर मार्केट में ज्यादा स्टॉक से अवेलेबल है. सो व्हाट दे डू, जहां से कम से मिल रहा है वहां बाय कर रहे हैं और जहां ज्यादा प्राइस है वहां सेल कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ arbitrage process. ठीक है, it is a process facilitates the individual investors buy the investment at a low cost in one market, sell them off at the higher price in another market. ठीक है, so ये that is called as a arbitrage process. ठीक है, with the help of arbitrage process, investors are admitted to shift the holding of leverage form to unleveraged form which is known as undervalue. ठीक है, इसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि लीवरेज फॉर्म और अनलीवरेज फॉर्म, ठीक है, उनमें के शेयर ये लोग चेंज कर रहे हैं. मतलब समझ लो मैंने इसके शेयर्स एक मार्केट में लीवरेज फॉर्म के शेयर एक मार्केट में कम में है मगर अदर मार्केट में वो लोग ज्यादा में बेच रहे हैं. ठीक है, सो मार्केट डिफरेंट में मतलब वो इतना ह्यूज डिफरेंट नहीं रहता है, 1-2 रुपए का ही डिफरेंट रहता है, बट नंबर ऑफ शेयर्स एक कंपनी के ज्यादा है तो दैट इज मोर मैटर. ठीक है, तो वो 1-2 रुपीज या 4-5 रुपीज का ही डिफरेंट रहता है, बट स्टिल investors are benefited if they are having the large number of shares of that particular company. Okay? So approach in arbitrage mechanism में ये पूरा उल्टा चला जाता है. ठीक है, so we cannot calculate कि जो हमने लीवरेज प्रोसेस में ये थ्योरम थोड़ा अलग से रिएक्ट करेगा. ऐसा इन लोगों ने सिर्फ बोला है कि वैल्यूएशन ऑफ द लीवरेज फॉर्म और वैल्यूएशन ऑफ अनलीवरेज फॉर्म विल चेंज if the investors is doing this arbitrage mechanism. They are taking the benefit of this arbitrage mechanism कि एक स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने बाय कर दिया और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस थोड़ी सी हाई तो वहां सेल कर दिया. ठीक है, उसमें तो वैल्यूएशन ऑफ लीवरेज फॉर्म एंड अनलीवरेज फॉर्म थोड़ा स्लाइटली वो चेंज होगा. ठीक है, दिस इज नोन एज अंडर वैल्यू कि वो अंडर वैल्यू आएंगे फिर वो लीवरेज फॉर्म और अनलीवरेज फॉर्म की जो नॉर्मल मैकेनिज्म में वैल्यूएशन है उससे कम इस आर्बिट्रेज मैकेनिज्म में उनकी वैल्यूएशन कम आ जाएगी. ठीक है, सो दैट्स इट स्टूडेंट. आज हम सिर्फ थ्योरी हम लोगों ने एमएम अप्रोच की पढ़ी. कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड. ठीक है, समजलं सगळ्यांना स्टूडेंट? यस मैम. ठीक है, आई विल मैं इसमें न्यूमेरिकल ऐड करके ये पीपीटी में आपको शेयर करती हूँ. ठीक है, उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इंफॉर्मेशन कॉस्ट थ्योरी भी एक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे. साइलिंग थ्योरी एक है, एक थ्योरी और वो एक है. पेकिंग ऑर्डर थ्योरी एक है. एंड अगेन ईबीआईटी पीबीटी एनालिसिस थोड़ी है. थोड़ा हम लोगों को फास्ट में करना पड़ेगा स्टूडेंट क्योंकि और 2-3 एनालिसिस है. ये चैप्टर 62 स्लाइड है मगर मैंने इसमें अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं ऐड किए और एक न्यूमेरिकल्स बढ़ के ये और बढ़ जाएगा तो थोड़ा हमें फास्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट. थोड़ा